Hello everyone. In this video, we will be discussing one of the case study of electricity, which will help to clear your concepts regarding resistance and further on what factors does resistance depends. As you can see, this is a graph of current versus voltage. For this, you need to know what is the slope of this graph gives. The slope of IV graphs gives us 1 upon resistance. What? That is called as conductance, which you'll be studying in higher sections. But IV graphs gives us the reciprocal of resistance. Secondly, if we talk about the graph VI, the slope of VI graphs gives us resistance. So if you are facing the question in the exams about the graph based, first step that you need to check it out is that your graph is VI or IV. If it is a IV graph, then you would get the reciprocal of resistance, and if it is VI, then you will be getting resistance. Okay, as you can see, there's a graph on your screen which is again a IV graph, and the IV graph gives us the reciprocal of resistance. So that means you have to inversely relate the factors of the resistance. If resistance is directly proportional to length, in this case it will be just opposite of it. Means, in simple language, there are 4 materials given to you, A, B, C and D. If I talk, the maximum resistance would be of, if the graph would have been VI graph, the maximum resistance would be for D. But since this graph is IV graph, so it would just be opposite. The maximum resistance would be for A. So if it has been asked which among the following, there are 4 slopes as you can see, A, B, C and D. Which among the following is having maximum resistance? The answer would be A. Moving ahead, now as you can correlate, I told you the maximum resistance is of A and the minimum resistance, obviously it would be of D, since it is IV graph. Now if there are some questions which have been asked in the case study regarding this graph, you need to correlate with the factors. As you all know, resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to the area of cross section. So as we have concluded that the resistance is directly proportional to the length and it is inversely proportional to area. What does it means? अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट होना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, और डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है सेम इफेक्ट होना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा. अब हम ये केस स्टडी रीड करते हैं. Ohm's law gives a relationship between current and potential difference, means I and V. According to this law, at constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. तो हमें पता है कि Ohm's law क्या बोलता है? Ohm's law बोलता है जो current है वो directly proportional है potential difference के. The ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. The following graph, which I'll be showing you, is obtained by a researcher while doing an experiment to study Ohm's law. If someone was researching about it or doing an experiment, the person noted the IV graph of 4 conductors, that is A, B, C and D, and their resistances also RA, RB, RC and RD respectively. So we will be dealing about this Ohm's law in a graph. As you can see this graph which we were discussing right here before, the very first question says that if all the conductors are of the same length and material, which is the thickest?
तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, ये दोबारा हमारा कौन सा ग्राफ है? IV ग्राफ है। और IV ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। अब जब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं मतलब उल्टा इफेक्ट होगा। हमने ये भी डील किया था, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है हमारा A का या D का? वैसे तो D का होता अगर VI ग्राफ होता। फिर से याद दिला रही हूँ, ये IV ग्राफ है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑफ A। तो अब दूसरी बात पूछी जा रही है, इफ द कंडक्टर्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल विच इज द थिकेस्ट। थिकेस्ट मतलब क्या है? थिकेस्ट मतलब कि मिनिमम रेजिस्टेंस होगा जिसका, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली रिलेटेड है, जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा। थिकेस्ट मतलब क्या हुआ? एरिया ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम। मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू मिनिमम रेजिस्टेंस, और मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है हमारा? D का। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, minimum resistance is of D. So if the question is saying which wire is the thickest, answer would be D. Moving ahead, if all the conductors are of the same thickness and same material, which is longest? अब हमने डिस्कस किया है maximum resistance is of, yes, A, and resistance is directly proportional to length. तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी हुई? A की ही हुई। So if all the conductors are of same thickness and same material, which is longest? A. A is the longest. Now, as you can see, all the 4 conductors and their slopes are shown in the graph. Which one of the following relation is true? सबसे सही रिलेशन कौन सी है? अच्छा, हमें पता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा A का है और सबसे ज़्यादा मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है? हमारा D का है। तो ऐसी रिलेशन देखते हैं, एक ही फिट बैठ रही है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस A का और सबसे ज़्यादा मिनिमम रेजिस्टेंस D का। तो हमारी रिलेशन कौन सी हो गई? A. A would be the correct answer. Moving ahead. Now if the question is saying, if the conductors A and B are connected in series and IV graph is plotted for the combination. अब उन्होंने बोला A और B किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। ऑलरेडी हमें पता है A का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, B का भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब उन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर लिया। सीरीज में ज्वाइन करने के बाद रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस और बढ़ गया है तो हमें स्लोप कैसा देखने को मिलेगा? मोर देन दैट ऑफ A। क्या हमें स्लोप A से ऊपर देखने को मिलेगा? बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में। मोर देन दैट ऑफ D, D से भी ऊपर देखने को मिलेगा, या लेस देन दैट ऑफ A। अभी हमने इस ग्राफ को जब जितना अभी तक स्टडी करा, हमने देखा है जितना हम नीचे आ रहे हैं उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे, अब क्योंकि ये IV ग्राफ हो गया और इसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया जब हमने रेजिस्टेंस सीरीज का हो गया, क्योंकि अब हमने रेजिस्टेंस A का भी ऐड करा है और हमने रेजिस्टेंस B का भी ऐड करा है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अब ये RS का है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना स्लोप कम मिलेगा हमें। तो आंसर क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ A. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, इफ द कंडक्टर्स C and D are connected in parallel. अब हमें पता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस पहले से भी कम हो जाता है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा स्लोप देखने को हमें मिल रहा है। तो इफ द कंडक्टर्स C and D are connected in parallel and the IV graph of the combination, how would the slope be? अब स्लोप क्या होगा? सबसे ज़्यादा C और D से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस D का था, अब हमने C और D को पैरेलल में लगा के और कम रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बिटवीन C and D? नो। लेसर देन दैट ऑफ A? नहीं, A से कम भी नहीं हो सकता। बिटवीन B and C भी नहीं। मोर देन दैट ऑफ D वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अवर C.
डी से भी ज़्यादा ही हमारा कहीं स्लोप होगा. So this was a little bit complicated case study. Hope you have gone through it.